आत्मवंदन सभी को। कृपया ध्यान की मुद्रा में बैठ जाइए। दोनों पैरों को क्रॉस करते हुए, हाथों की उंगलियों को हाथों की उंगलियों में जोड़ते हुए, अगर आपने चश्मा पहना है उसे उतार दीजिए। सभी गतिविधियों से ध्यान हटाकर अपनी आंखें बंद कर लीजिए। Please sit in a comfortable meditative posture. Cross your legs, clasp your fingers into fingers, and gently close your eyes. And bring your whole awareness, alertness towards your breath. आपका संपूर्ण ध्यान आपके श्वासों पर होगा। और जब हम श्वास ले रहे हैं हमारा शरीर फूलता है, जब हम श्वास छोड़ते हैं हमारा शरीर अंदर को जाता है। When you're inhaling, your body is expanding, and when you're exhaling, it is going back to its actual shape. So, for next 1-2 minutes, focus on your breathing and your body parts. अगले 1-2 क्षणों के लिए अपने श्वासों पर इसी तरह ध्यान दीजिए। अब जब भी आप ध्यान में बैठें तो कृपया करके इसी तरह से अपने श्वासों के ऊपर ध्यान दीजिएगा। और जब आप श्वासों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, इसी प्रकार से स्वयं को प्रकाश के रूप में देखिए। प्रेम से ओत प्रोत प्रकाश। The way you're breathing right now, just see your physical form as a love and light. And when you're inhaling and exhaling, it is expanding. अब अपना सारा ध्यान अपने हृदय केंद्र पर लेकर आइए। और आपके हृदय केंद्र में सभी दिव्य ऊर्जाओं को, प्रकाश को, आपके गुरुमंडल को, पिरामिड की ऊर्जा को एक दिव्य प्रकाश के रूप में देखें।
Now focus on your heart center, middle of your chest. Invite, invoke all supreme powers, all your masters and their masters, energies of pyramid, energies of your ancestors. अपने पूर्वजों की ऊर्जा को भी निमंत्रित कीजिए। सभी को दिव्य प्रकाश के रूप में देखना है, किसी फिजिकल फॉर्म से नहीं कनेक्ट करना। डोंट कनेक्ट विद देयर फिजिकल फॉर्म, कनेक्ट विद देयर लाइट। Now this pyramid size is increasing and covering your entire body, like you are sitting inside this beautiful golden pyramid. अब ये पिरामिड जो है, इसका सुनहरा प्रकाश बढ़ता जा रहा है और आप सभी के शरीर के आकार से बड़ा इसका आकार है और आप सभी इसके अंदर बैठे हैं। और ये पिरामिड नीचे से बंद है। दिस पिरामिड इज क्लोज फ्रॉम द बॉटम and this pyramid holds all the energies of God's frequency. It holds the aura of God, all the qualities of God, and it is so intense that it is crossing through your physical form, like the light of this golden pyramid. It's entering inside your body from the front, and from the back it is coming out. From the right side of your body it is entering inside your body, and from your left side it is going out, creating a proper square inside this pyramid. ये पिरामिड जो है, इसमें हम बैठे हुए हैं, तो इस पिरामिड की जो ऊर्जा है आपके शरीर के अंदर से होती हुई, आपके सामने से, आपके शरीर के सामने वाले भाग से लेकर आपके शरीर के पिछले भाग से इसकी ऊर्जा निकल रही है। फिर आपके दाईं ओर से ये ऊर्जा आपके बाईं ओर शरीर के अंदर से होकर निकल रही है और आप ये चतुर्भुजीय पिरामिड के 4 ट्रायंगल्स में आ गए हो। Your body is now in 4 triangles. So see all these 4 triangles as the elements: fire, water, air, metal, and ether. We are already doing meditation, so the bottom feel that you are sitting on the earth. Sky, all the elements are there. ये जो 4
चतुर्भुज हैं, ये आपके अग्नि कोण, आपका वायु कोण, जल कोण, आकाश और धरती। तो जहाँ पर हम बैठे हैं, आपके बॉटम वाला जो है हिस्सा, वो धरती है। तो ये आपके जो 4 तत्व हैं, 5 तत्व हैं, उन्हें बैलेंस किया जा रहा है। और आपके सिर के ऊपर की जो ऊर्जा है, जहाँ इस पिरामिड का ट्रायंगल ऊपर का भाग है, वहाँ से निरंतर ईश्वरीय ऊर्जा का प्रवाह आपके सहस्त्रार चक्र पे। There is a continuous flow of divine wisdom, cosmic energies on the top of your crown chakra, continuously flowing. And as it is continuously flowing, the energy inside the pyramid when you're inhaling and exhaling, is purifying every single cell of your body, every single organ, cleansing your conscious and subconscious mind, deleting unnecessary, unwanted energies permanently. ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो निरंतर आपके सिर के ऊपर से प्रवाह कर रही है, ये आपके शरीर के एक एक अंग में ऊर्जा का नया स्रोत पैदा कर रही है। और प्रत्येक स्रोत के साथ में आपका शरीर और आपकी आत्मा से सभी जो अनुचित यादें हैं, बातें हैं, उन्हें हमेशा के लिए मिटाया जा रहा है। आपके 3D ओल्ड पैटर्न को परमानेंटली डिलीट किया जा रहा है। आपके चेतन और अचेतन ऊर्जा से सभी ऊर्जाओं को हमेशा के लिए मिटाया जा रहा है। आपकी ऊर्जा को कोई चुरा नहीं सकता, कोई भेद नहीं सकता। आपकी ऊर्जा सुरक्षित है। आपके आभा मंडल में केवल और केवल आपकी ऊर्जा है। बाकी सभी ऊर्जाओं को प्रकाश में ईश्वर ले गए हैं। This golden light is cleansing every single part of your brain, erasing third D, conscious and subconscious,
parts which are stored here. Deleting permanently the energies which are not in alignment with your present reality. Your aura is your aura. No one can steal your energies. No one have the concern to enter into your energies. No one have power to enter in your aura. No one have power to copy you. You all are unique. You have a different path. आपका सभी का ऊर्जा केंद्र बहुत ही अद्भुत है और आपकी अद्भुत ऊर्जा को कोई चुरा नहीं सकता, कोई भेद नहीं सकता। आपके इस क्षण का वास्तविक सत्य कोई बदल नहीं सकता। आपकी इस क्षण की वास्तविक ऊर्जा को कोई भेद नहीं सकता, कोई चुरा नहीं सकता, कोई इसे मिरर नहीं कर सकता, कॉपी नहीं कर सकता। ईश्वर की ऊर्जा को कॉपी किया ही नहीं जा सकता। ईश्वर स्वयं में पूर्ण है। कॉपी उस चीज की होती है जहाँ पे हम स्वयं को पूर्ण नहीं समझते। No one can copy you as no one can copy God. No one is in competition with God. No one feels jealous about God. No one hate God. कोई ईश्वर से दुश्मनी नहीं रखता, कोई ईश्वर से गुस्सा नहीं करता, कोई ईश्वर को बुरा भला नहीं कहता। Always show gratitude for all your experiences. Be in your energy of complete surrender and peace. अपनी इसी शांत गहरी ऊर्जा के साथ में बने रहिए, अपने ईश्वरीय तत्व के साथ में बने रहिए और प्रत्येक श्वास के साथ में अपनी ऊर्जा के लिए, अपनी ईश्वरीय छवि के लिए धन्यवाद कीजिए कि ये अद्भुत ईश्वरीय ऊर्जा को, इस अद्भुत ईश्वरीय छवि को कोई चुरा नहीं सकता, कोई इसका दिखावा नहीं कर सकता। ईश्वरीय ऊर्जा को महसूस किया जा सकता है स्वयं में बदलाव लाकर। हम स्वयं में बदलाव ला सकते हैं। हम दूसरों को उनके जीवन में हस्तक्षेप ना करते हुए ईश्वर का ये एक मार्गदर्शन एकीकृत के पाठ्यक्रम के द्वारा बता सकते हैं कि किस प्रकार ईश्वरीय छवि के साथ एकीकृत हुआ जाता है। You are made in the image of God. The energy in this present moment you are experiencing, it is your own. No one is currently unifying with the image of God. And you are keep
doing the things mentioned by Mahavatar Babaji, a yogi, a avatar, not by a normal person who is revealing the truth about the image of God, not a fantasy. And when we connect with the reality that I'm the image of God, I need to work on myself. God is love and light. I'm made in the image of God. I am love and light. God is all knowing intelligence. I'm made in the image of God. I am all knowing intelligence. God is omnipresent. I'm made in the image of God. I am omnipresent. God is joy, bliss, and happiness. I'm made in the image of God. I am joy, bliss, and happiness. God is perfect. I'm made in the image of God. I am perfect. ईश्वर प्रेम और प्रकाश है. मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई प्रेम और प्रकाश हूँ. ईश्वर के सभी गुण मेरे गुण हैं. मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई हूँ. ईश्वर, इस क्षण आपकी कृपा से मुझे आपका बोध हो रहा है, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद. ईश्वर के सभी विचार मेरे विचार हैं. ईश्वर के सभी गुण मेरे गुण हैं. मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई हूँ. ईश्वर प्रेम का अनंत सागर है. मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई अनंत सागर हूँ. ईश्वरीय ऊर्जा मेरे रोम रोम में, शरीर के एक एक अंग में, इस क्षण में, इस ही क्षण में आप ईश्वर की छवि में हैं. In this present moment, in this present reality, you are the image of God. ईश्वर क्षमा है. मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई क्षमा हूँ. God is forgiveness. I am made in the image of God. I am forgiveness. I accept and I claim myself. I claim my self-acceptance. I claim my self-acceptance. I accept my self-acceptance. मैं अपनी ईश्वरीय छवि का दावा करती हूँ. मैं अपनी ईश्वरीय छवि का दावा करती हूँ. मैं अपनी ईश्वरीय छवि को स्वीकार करती हूँ. मैं अपनी ईश्वरीय छवि को स्वीकार करती हूँ. इस क्षण में आपकी ऊर्जा ईश्वर के साथ, ईश्वर की ऊर्जा के साथ, ईश्वर की छवि के साथ ओतप्रोत है. इस क्षण में आपके शरीर में होने वाली हलचल, आपकी बुद्धि में होने वाली हलचल, शरीर के एक एक अंग में होने वाली हलचल, इस क्षण में आपकी ईश्वरीय ऊर्जा, आपकी ईश्वरीय ऊर्जा की छवि
ना शरीर है, ना शरीर से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के अवरोध हैं, ना आत्मा है, ना आत्मा से जुड़े हुए कोई अवरोध हैं। ईश्वरीय छवि इसी क्षण में, in this present moment, you are in alignment with God's image. Every single part of your body is right now holding the energy of image of God. In this present moment, your body, just observe how your body is reacting. This is your physical and non-physical form of God's image. ये आपका भौतिक और सूक्ष्म शरीर ईश्वरीय छवि से ओतप्रोत है। आपका शरीर, किसी और का नहीं। आपका दायां शरीर, आपका बायां शरीर, बायां मस्तिष्क, दायां मस्तिष्क ईश्वरीय ऊर्जा से ओतप्रोत। Your left body, your right body, your left brain, your right brain. In this present moment, in this present reality, is in alignment with God's image. इस क्षण की आपकी सच्चाई कोई चोरी की हुई नहीं, बल्कि जानते हुए बाबा जी ने ये सत्य का मार्ग दिखाया है। और इसी क्षण में आप उस ऊर्जा से ओतप्रोत हैं। इसी क्षण में आपकी मन बुद्धि ईश्वरीय छवि से ओतप्रोत है। ये क्षण आप छवि से ओतप्रोत हैं ईश्वर की। अब स्वयं से दोहराएं, मैं इस क्षण में अपनी ईश्वरीय छवि का दावा करती हूँ। मैं इस क्षण में अपने ईश्वरीय छवि का दावा करता हूँ। मैं इस क्षण में अपनी ईश्वरीय छवि को स्वीकार करती हूँ। मैं इस क्षण में अपनी ईश्वरीय छवि को स्वीकार करता हूँ। Just say these words repeated in this present moment. I am in alignment with my image of God. I claim it. In this present moment, I am in alignment with my God image and I claim it. In this present moment, I am made in the image of God. I accept it. In this present moment, I'm made in the image of God. I accept it. This is my new reality. This
This is my new reality. In this present moment, this is my new reality. I am made in the image of God. इस क्षण में मैं ये दावा करती हूँ, मैं ईश्वरीय छवि से बनी हूँ। मैं इस क्षण में ये दावा करती हूँ, मैं ईश्वरीय छवि से बनी हुई हूँ। मैं इस क्षण में दावा करती हूँ, मैं ईश्वरीय छवि में बनी हुई हूँ। मैं इस क्षण में अपनी ईश्वरीय छवि का आह्वान करते हुए उसे स्वीकार करती हूँ। मैं इस क्षण में अपनी ईश्वरीय छवि का आह्वान करते हुए उसे स्वीकार करती हूँ। मैं ईश्वरीय छवि में बनी हुई हूँ। मैं ईश्वरीय छवि में बनी हुई हूँ। मैं ईश्वरीय छवि में बनी हुई हूँ। I am made in the image of God. 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 This is my reality in this moment. Now say your name and just say these words. In this present moment, this is my reality that I am made in the image of God. अब अपना नाम लेकर स्वयं से कहें कि इस ही क्षण में मेरा वास्तविक सत्य ये है कि मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई हूँ या बना हुआ हूँ। इसे 5-6 बार दोहराइए। Repeat it 4-5 times. अब जिस पिरामिड में आप बैठे हैं, गहरे ध्यान में जाइए। Now as you all are sitting inside the pyramid, go into the deeper meditative state.
इस क्षण आपका शरीर आप ही के ध्यान में बैठा हुआ है, क्योंकि आप ईश्वर की छवि में बने हुए हैं। आपकी आत्मा आप ही के ध्यान में लीन है, क्योंकि आप अपनी ईश्वरीय छवि से एकीकृत हैं। इस क्षण में ये आपका वास्तविक सत्य है। In this present moment, you're meditating with your image of God. Your soul energy is holding your image of God, and you are doing meditation of your own image of God, your own energies. You're working on your own energies. आप स्वयं की ऊर्जा पर केंद्रित हैं। और आपकी स्वयं की ऊर्जा ने आपके अंदर भीतर गहरी शांति, the peace in you're experiencing right now, the harmony you're experiencing right now, you created it for yourself. ये सहजता, संपूर्णता, ये आनंद, ये शांति आपने स्वयं अपने लिए उत्पन्न की है, और ये इस क्षण में आपका सत्य है। This is your truth in this present moment. Today's guidance I received from Ramanamir Maharishi. आज का सारा ध्यान रामना महर्षि जी ने करवाया है। धीरे धीरे अपना ध्यान अपने शरीर में वापस लाएं। अपने आसपास के वातावरण को महसूस कीजिए। Slowly, slowly bring your awareness and alertness back to your physical form. Feel your surroundings and let's show deep, deep gratitude to Mahavatar Baba Ji, Ramana Maharishi Ji. Deep, deep gratitude to Roger. Deep, deep gratitude to all supreme energies, pyramid energies. Deep, deep gratitude to this present moment. Deep, deep gratitude to Zoom. Deep, deep gratitude to all of you. Being the image of God, you shared your energy today. Deep, deep gratitude for our home, food, clothes, shoes. Deep, deep gratitude for our kids.
deep, deep gratitude for our family members, partners, our friends, colleagues, neighbors. Deep, deep gratitude for our financial conditions. Deep, deep gratitude for our food, clothes, shoes. Deep, deep gratitude for every single thing we have in this present moment, in this reality, in this present moment, in this reality, at this moment, currently, whatever you have. Deep, deep gratitude for that. Deep, deep gratitude, our first master, our breath. कोटि कोटि धन्यवाद है महाअवतार बाबा जी का। कोटि कोटि धन्यवाद है रमना महर्षि जी का। कोटि कोटि धन्यवाद है रॉजर जी का, जो इस पुस्तक के लेखक हैं। कोटि कोटि धन्यवाद है सभी दिव्य ऊर्जाओं का, गुरु मंडलों का, पिरामिड की ऊर्जा का। कोटि कोटि धन्यवाद है हमारे घर परिवार के सदस्यों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे पार्टनर्स के लिए, हमारे मित्रों के लिए, सहकर्मियों के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद है हमारे पड़ोसियों के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद हमारे घर के लिए, परिवार के लिए, हमारे खान पान के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद है आपके ईश्वरीय शरीर का, ईश्वरीय छवि से बना हुआ जो आपका शरीर का एक एक अंग है, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद आपकी ईश्वरीय छवि में बनी हुई बुद्धि का। कोटि कोटि धन्यवाद है आपकी ईश्वरीय छवि में बने हुए विचारों का। कोटि कोटि धन्यवाद है इस क्षण का। कोटि कोटि धन्यवाद है जूम का। कोटि कोटि धन्यवाद है इस क्षण में जो भी हमें उपलब्ध है, उन सभी रिश्तों का, उन सभी वस्तुओं का जिनको हम उपयोग करते हैं, उनके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। इस क्षण में जो भी मेरे पास है ईश्वर, आप ही की कृपा से है। इन सब के लिए मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। कोटि कोटि धन्यवाद है इस क्षण के लिए ईश्वर। ये क्षण आपके आशीर्वाद से हमारी ज़िंदगी में आया है। महाअवतार बाबा जी का कोटि कोटि धन्यवाद हमारा सत्य के साथ मार्गदर्शन करने के लिए। इस क्षण में हम सभी अपने जो भी ऊर्जाएं हैं उसमें निरंतर परिवर्तन होता हुआ देख रहे हैं, विचारों में भी, आचरण में भी। ईश्वर यूं ही आपकी कृपा सब पर बनाए रखना। कोटि कोटि धन्यवाद हमारे श्वासों का, हमारा सर्वप्रथम गुरु। अब अपने दोनों हाथों की हथेलियों को मल लीजिए और अपनी आंखों के ऊपर रख लीजिए। 5 4 3 2 1 0। हथेलियों में ही आंखें खोलिए और स्वयं को आशीर्वाद देते हुए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू। डीप डीप ग्रैटिट्यूड आप सभी का आज के ध्यान में। मुझे बासी आ रही है सुबह सॉरी में जुड़ने के लिए। तो हम अपना कॉपी पेन उठाएंगे, जो भी आपका आज का अनुभव रहा है उसे हम लिखेंगे। तो हम कर रहे हैं सप्ताह 10वें का, वीक 10 का, डे 3, तीसरा दिन, क्रिएटिंग द वर्ल्ड ऑफ ट्रू डिजायर्स। वास्तविक सत्य का संसार का संचार कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो उसके जो भी आज आपको मतलब गाइडेंस मिली उसको अभी लिखना है आपने। के बाद में हम भूल जाते हैं। आज डेट है 18/11/25।
कोटि कोटि धन्यवाद है आप सभी का आज के ध्यान में अपनी ऊर्जा देने के लिए। किसी को कुछ पूछना है या शेयर करना तो अनम्यूट कर लीजिए। सॉरी, मैं जाग तो काफी देर से रही, पता नहीं मुझे क्यों इतनी नींद आ रही है। जी गणेश जी। आपकी आपका थोड़ा नॉइस आ रहा है, देखिए तो। हाँ जी, बोलिए। Hello. हेलो, हाँ जी, अब या नाउ आई कैन हियर यू क्लियरली। Morning, Maji. Session is so wonderful, so peace. बहुत अच्छा था. It's a deep, deep meditations. We can feel the energy that the golden pyramid has been receiving the cosmic energy. So बहुत अच्छा था. As you said, like right, old pattern energy has been removed from the third dimension. So what is this dimension? How many dimensions are there actually? The dimension is not outside, it is inside us. Our Okay. thoughts, we need to release it, and we have to keep repeat these things to our physical form, that I'm not the person who I was in the past. In this present moment, I am changing my reality. The realities we are keep tapping into, we when we learn something new, we are entering into a new dimension, new portal, and make it easy and clear, right? And when I'm not leaving the my old self, I'm carrying the same energy. So that is and we don't need to go for in which dimension I am, because there are multiple universes, multiple dimensions. We get that glimpse about all those, so that we can get idea that the physical form is not only on earth, other things are also existing, and we need to be in alignment with them. So that is a beauty that of meditation, where our astral masters take us to different dimensions. Even when you're sleeping, uh, you saw so many things in your dreams, and when you wake up you were like, oh, my reality is completely different from what I saw while I was dreaming, right? So that is like that time you were into a different dimension. And also when there is something your master wants you to teach, they make sure that you're mentally and physically ready for it. If they give you so much information, like you're asking about dimensions, you need to first clear the basics. Once your basic is clear, then you will like, oh no, okay, now it makes sense. Like when you started unified course, we are now in 10th week, you are seeing changes in yourself. So you are entering into a new dimension, new reality of you. It's not that you are not the same person you were before unified course. Because I'm not saying 100% changes, 5-10% even change will be, show that your personality is not the same the way it was before. Because my personal experiences with unified course, I've become very peaceful and calm, and I'm in harmony. Like I'm not bothered about anything. That is Yeah. my experience. So most of the people, because when we connect with when I'm always running behind things, I want to know this, it means I'm still searching, I'm still decoding. But once you are in that energy, like no, I'm all right, like I don't, I'm not bothered about anything. Let divine reveal me whatever is in this present moment, what is important for you. Your divine your spiritual masters will just reveal that to you. Like when we were studying in the school, some of the students were weak, so the teachers were giving them extra classes. It's the same. If you're ready, your masters will give you extra classes. Otherwise they will keep you where you are. So don't go too deep. In dimensions are multiple, because there are multiple universes. And in every yuga, so many things in the same time happen in different parts, in different places. Even if you look at the world, I make it
more easy. We have so many countries, so many states. We don't know all the states. Yeah, we never been to there. But how can I go there? Once I apply for the visa for that particular country, then I will go and explore. It's the same way with the dimensions. Okay. Because when you make it very easy, it is very easy to understand. Means why masters won't take her, means they will take you to another planet, and then you were like wondering where I am. So they just give us little glimpse that go, okay, these energies are there. We are here to support you, but you need to have a full trust. So enjoy your journey. You don't need to worry. They will reveal whatever is your soul level, and stop asking questions. When you are asking question, it means you still think you're lacking in something. Rather than that, just say, reveal me, who am I, why I'm on earth, and what is my life purpose. And I'm in a full surrender, and I give permission to myself to experience new things without fear. If the fear is there, that is also a blockage, like that is not allowing you to go to next level. Then you are going in illusions. Oh, this happened, oh, that happened. No, when you are completely surrender means no if and but. Yes, divine, what like today's meditation, you experienced the energy, you trusted it, it is actually happening. That type of surrender. Okay. Thank you, Okay. Marty. Deep, deep. thank you, thank you, thank you. Deep gratitude to you also. Anyone else wants to share anything? Ji Prashanta ji. Unmute yourself. Hello. Thank you, Vani. Unmute kit. हाँ No, बोलिए. ma'am. Okay. Atmavandan, ma'am. Atmavandan. Today I saw, ma'am, one book in that writings are there in blue ink, and at the end, little something is writing with the red pen. Little only right at the end. Just I saw that one, and most of the things in between I was in trance. From 2 3 days I was in trance. I'm not hearing sometimes what is guiding, and morning also, ma'am. Usually daily I will get dreams. Then I woke up, and today I am working in that I have lot of anger is inside. Okay, then I am giving love and light continuously, and it will giving me one word to give love and light. So I am today morning whole I did this love, sending love and light to all the things and Babaji. And yesterday, ma'am, I saw one video, just Ramana Maharshi, and I was not going that 1 2 3 sentence, just I listen and I closed it. Then I just prayed that I, for me also, I want to know who am I. So I want to get out from this illusion, like that I told. uh, Today, Guru has came actually, and ma'am, this was this book and Babaji, everything, ma'am. It was a great gift for me, because before, even though God has revealing me, but I'm not understanding the things, even the dreams or any message. I was getting afraid. What is this? Sometimes correct sentence. That means this. I'm thinking now that in this book they are telling correcting thoughts and all, but for me it is happened, but I was not aware that how, what is, I was in confusion, what is these things coming. Now I am very clear that these things are, I have to correct these sentences. It was in my mind, so like that it appear. But and these things are the message. Now I'm started differentiating the things, ma'am. So I'm think it was so clear. I'm very happy in that.
many months I was in confusion. What is these things happening? Because, ma'am, we are not here any guru. I'm not any guru is there for me. Any physical guru or like that. I'm coming to the Aham Brahmasmi classes. Some videos I will watch. Through that only I'm getting these things, knowledge and all. So it wa- so this was the gift in total. And I'm very very thankful to, lots of gratitude to Babaji, you, and this book and the author and this all the soulmates here. Thank you, ma'am. Thank you very much. Thank you so much, Prashanta ji, for sharing your experiences. And when you are ready, Guru is there to give you what you want. But the thing is, we won't trust our own intuition. And for you, the guidance I'm receiving is now stop giving, sending love to others, start giving, sending love to yourself. You need to bring the balance also. You're giving, giving, you're not receiving. Be open for receiving. Say, I am ready to receive love and light in my life. And apart from that, Ramana Maharishi, I was also very surprised when in the end he revealed himself. I saw his form and everything, and I was like, oh. Then he revealed, my name is Ramana Maharishi, and I was like, oh, I'm so grateful that I got, you know, uh, and the same way when you are doing unified course, you are now in 10th week, right? When you are keep repeating the same thing, that's why this course structure is for 6 months, because overnight nothing change. But when you tap into the same energy again and again and again, your mind and your physical appearance, everything completely change. That shift happen immediately. So right now, that what you're experiencing in your physical form, that right now this is my reality. I'm not a runner, I'm not a chaser, I'm not beggar for love or anything. I'm sitting here and I'm showing gratitude that whatever I have currently in front of me, I'm very grateful for it. And on the same time, we have so many experiences in our life, we need to do grounding, walk bare feet, walk bare feet to release the anger, right? Or if means the weather, I think over there is good, but some of the places like in UK right now is very means very very cold. So those who are in abroad, the if the climate is changing, you are not able to go outside for grounding. If you have a plant at home, touch the soil, feel the sense, and put one hand over your heart center and one to the soil, and feel that you're connecting with Mother Earth's heart, and bring that balance. That is very, very important. And keep doing what you are doing. And I'm very happy that you are experiencing those things within you. Congratulations. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I told, I have messaged you also. I'm thinking that there is something what is not me, it's removing actually, but it has little giving me troubles, even though it is the time to remove all the things which are not mine actually. This is happening in me. I'm thinking, and I have this thing because they are revealing, masters are revealing me through this and all. And ma'am, day before yesterday, I heard the name Madhvacharya while doing this thing, meditation. Just I keep that. It's okay. I like that, ma'am. So Thank you very much once again, ma'am. thank you so much. Google the name who means, or either ask who you are, why you came to my energy, what Yeah, messages you feel. Madhvacharya is, yeah, so he is also like who brought a Krishna idol to Udupi. Udupi Krishna temple is there, no? Madhvacharya is the like that guru. Okay, ma'am. Thank you. Thank you so much, Prashanti ji. Thank you so much for sharing. And I will come back to you because yesterday night I saw your message, and then I was like,
because it's a night time, you are sleeping. So I was like, I will have a chat with you today. I will, I go through your message and I will give you response today. Thank you. Yeah, ma'am. Whenever you free, ma'am, do this because I don't have any problem that because you should be free for to do things. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, thank you. Because I'm not the person who do the things in rush. I take my time, and because when you take time, you connect with that person's energy. I put my shoes in your energy. I connect with you intuitively. Then I go through the things you are mentioning to me. And it I can't do when I'm busy in something. It I will do when I am, most of the time I'm free, I'm sitting, then I'm thinking about one person. I check all of you what you are doing. That time I check your homeworks, then I was like, okay, she needs this, oh, he needs this. So that's how I checked yesterday, so I was like, I will come back to you. Okay, thank you, Prashanti ji, and thank you, Meenakshi ji. Heartfelt gratitude, ma'am. Very deep meditation. Thank you, Meenakshi ji. Thank you. Thank you, Vandana Sharma ji, for your blessings. Thank you. Thank you, Meena ji. Deep, deep gratitude. Thank you for the wonderful opportunity, Baba ji and Monica ji and all. Thank you, Meena ji, for joining today's session. And one more message. Where is the another one message? Oh, thank you, Meena ji. Atmavandan, heartfelt gratitude, Monica ji, Baba ji, Ramana Rishi, and all the divine masters for such a deep, calming meditation. I really didn't want to come out of this divine experience. Thank you so much for everything. Thank you, Vani ji, for your message. Thank you. Thank you to you. Thank you to all of you. Thank you, Meena ji, for such a lovely message. Deep, deep gratitude to all of you. Keep doing what you are doing. You all are on the right path, and you have to claim again and again, again and again. Make sure if you, whenever you are free, we are in chapter, we are doing 10th week practice, right? If you can find it and you can just deep deep gratitude to you also, Vani ji. If you can write those lines given by Babaji again and again, at least 5 times every day, you will see the changes. Because when we are writing, one is I'm verbally talking and you're experiencing, your body had that. When you start writing, you are actually decoding it more deeper on your soul level. सो अगर आपको टाइम मिलता है तो जो बोला गया है बाबा जी के द्वारा 10वें सप्ताह में, अगर आप उसको लिख लो ना 5 बार, तो उससे ये होगा, जब आपने ध्यान में बैठे थे तब भी आपने अपनी आत्मा में और अपने उसमें बॉडी में उसको लिया है, बट जब आप लिख रहे हो उसको तो आप एक एक शब्द पर ध्यान दोगे ना, तो वो और भी ज़्यादा आपका जो है ऑरा पर और एनर्जी पर इफेक्ट डालेगा। तो डीप डीप ग्रैटिट्यूड, थैंक यू सो मच आपके सभी के प्यार के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे।